कहाँ से? वो लगा के देखो इसमें, वो है क्या? वो लगा के देखो कान में, ये हो सकता है। ये देखना है। ये तो उधर से कर रखा उन्होंने। वीडियो तुम अपनी नहीं, अपनी में जा सकते। वो लगा के देख लो। लेकिन म्यूट ऑल कर दो। क्या बोलते हैं, मैंने दे दिया था उसे, कर दिया वो, मैंने दे दिया था उसको, वो कर दिया। हाँ, फेस अब विजिबल नहीं है। नहीं ठीक है, इतना सब कुछ बताने में ये इंट्रोडक्शन और क्लोजिंग आई डोंट थिंक इतना सब कुछ बताने की जरूरत है, लेकिन सब कुछ समझ स्टार्ट करो। So, good afternoon, everyone. We are going forward with the fourth session in the online longitudinal training program conducted by the Department of Emergency Medicine here at SGPGIMS Lucknow. It gives me immense pleasure to introduce today's speaker for the session titled Pre-Transplant Workup in Bone Marrow Transplant Unit and Role of Nurses. This will be an advanced practice discussion. This is the fourth session in the longitudinal training program. We have already conducted 3 sessions prior to this, and there are many sessions upcoming. All those will be communicated through you through the WhatsApp group created. So today's session will be on the pre-transplant workup in the bone marrow transplant unit. Our speaker for today is Mr. Mrinmoy Methi, who is currently working as a nursing officer in the bone marrow transplant unit here at SGPGI EMS Lucknow since 2024. He is a BSc nursing graduate from Manipal College of Nursing.
Prior to joining his services here at SGPGIMS, he has worked in critical care nursing at a private hospital, where he gained hands-on experience in managing critically ill patients, emergency response, and multidisciplinary team coordination. With his vast background in critical care and specialized bone marrow transplant nursing, he brings valuable practical insights into the pre-transplant workup and clearly highlights the vital role of nurses in patient assessment, preparation, and continuity of care in the BMT units. I'm confident that this session will be highly informative and beneficial for all the participants. Please join me in warmly welcoming Mr. Mrinmoy Methi. Over to you, sir. Thank you, Mr. Abhishek. So, as Abhishek told, I'm Rinmoy Maiti, currently working as a nursing officer in BMT, and today we'll be discussing about pre-transplant workup and critical role of nurses in this pre-transplant phase. Okay, so before we dive into the main topic, we'll refresh our memory about bone marrow transplant. Okay. So first is transplant process. If we go through the overview, it's mainly we administer high dose of chemo, then we collect stem cells from the donor, process it in the lab, then we infuse the stem cells into the patient. Okay. So second, we have two types of stem cell transplant. Is autologous stem cell transplant, where we use patient's own stem cells for the rescue, and second is allogenic stem cell transplant, where we use donor's stem cells for marrow replacement. Both has similar core principle. For the both we use high dose of chemo followed by stem cell infusion. Now move on to phases of transplant. We have pre-transplant phase, which we will be discussing throughout this discussion. Second is conditioning phase, where we prepare the patient's body to receive the transplant. Then infusion phase, where stem cells introduced into the body. Then fourth is engraftment phase, where transplanted cells begins to grow. Then fifth is recovery phase, where body heals and patient regains strength. So coming to the objective of this discussion, at the end of this class, we'll be able to analyze the multidisciplinary component of bone marrow transplant. We'll be able to define advanced nursing responsibility, and we'll be able to evaluate quality and make strategies to improve those qualities. So what is pre-transplant phase? Pre-transplant phase starts with referral and ends the moment conditioning start. Conditioning मतलब हाई डोज ऑफ कीमो जो हम देते हैं स्टेम सेल इन्फ्यूजन से पहले, उसको कंडीशनिंग बोलते हैं. तो रेफरल से लेके कंडीशनिंग तक को हम लोग प्री ट्रांसप्लांट फेज बोलेंगे. So let's move on to the main topic, the workup. Whenever we say workup, people always think about a checklist. So I want us to change that mindset and think of these four pillars supporting the patient. Pillar number one is disease and organ status. इस पिलर का गोल क्या है? इस पिलर का गोल है कि can the patient's body survive the therapy? How we can check for disease and organ status? Disease organ status will be checked by different investigation. For disease status, we do bone marrow biopsy, PET CT, lumbar puncture, and for organ status, major four organ status, we check for echo, we do PFTs, RFTs, and we need dental clearance for this pillar. What should nurse focus in this pillar? Nurse should focus, is the patient actually medically optimized, or we are just checking the boxes? Pillar number two, donor identification and clearance. How do we identify the donor? So in this pillar, our goal is the donor safe, suitable, and available? We have components like HLA typing. That's how we can we can identify the donor. In Indian settings, we mainly do HLA typing for patient and family, for immediate relatives only. But if you go outside, they have a national registry where you can sign up as a donor.
And the third component is formal donor medical and psychic clearance. After you identify the donor, you need medical and psychological clearance for transplant. What should nurse focus in this pillar? Nurse should focus is the donor medically clear, educated and fully committed. ऐसा नहीं हो सकता कि हम डोनर को सिलेक्ट कर लिया और डोनर बोलता कि नहीं ये टाइमलाइन पे हम अवेलेबल नहीं रहेंगे. You can't do that. Okay, so you need a donor fully, you need a fully committed donor. Then pillar 3, psychosocial readiness. So what's the goal in this pillar is the patient support system realistic or robotic? Why I said robotic? क्योंकि जैसे ट्रांसप्लांट बहुत लंबा प्रोसेस है, स्ट्रेनस प्रोसेस है, सो यू नीड ए केयर गिवर हु कैन गिव केयर for 24/7 for minimum of 100 days. It can go up to 200 days also. So you need to do a proper caregiver if he or she will be able to cope with the result of the transplant. If he or she is using any substances, these all things can alter the result of transplant. What are the nurses focus? Nurse should assess for all the soft risks like alcohol abuse or the caregiver is already elderly. So we have to assess all those things. Pillar number 4, we have logistical and financial access. If anyone is in bone marrow transplant, they knows how much can a transplant cost. So normal people cannot do a transplant without insurance. Our Indian government is providing currently providing many insurance for transplant patient. Okay, so we have patient has to have a insurance authorization. Patient has to have a pharmacy dedicated for transplant only. Patient has to have housing and lodging within 1 hour of the hospital for follow-up, and patient should have a proper transportation plan. He or she should not use any public transportation for follow-up and post-transplant. So what should nurse focus? Nurse should focus, has every non-medical gate been open? कि जितने भी नॉन मेडिकल बैरियर्स है ये सब कुछ ओपन किया गया है कि नहीं, क्योंकि एक बार हम लोग पेशेंट को ट्रांसप्लांट में ले ले उसके बाद वी कैन नॉट जस्ट से दैट इंश्योरेंस नहीं है और फार्मेसी में मेडिसिन नहीं है, वी कैन नॉट से दैट, राइट. देन वी विल मूव ऑन टू द मेन टॉपिक, कंपोनेंट ऑफ प्री ट्रांसप्लांट वर्कअप. पहला कंपोनेंट है डिजीज असेसमेंट. सो डिजीज असेसमेंट साइकिल, मैं साइकिल क्यों बता रहा हूँ, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है ट्रांसप्लांट के लिए. जब पेशेंट आता है वी एसेस फॉर डिजीज स्टेटस बाय डूइंग बोन मैरो बायोप्सी. देन वी डिटरमाइन थेरेपी रेस्पॉन्स. जो भी बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए आता है he must have undergone chemotherapy. तो उस कीमोथेरेपी रेजिमे में कितना इफेक्टिव था पेशेंट के लिए. Then we construct transplant plan according to the previous therapy. Then after transplant we optimize the patient outcome. तो ट्रांसप्लांट के बाद जब पेशेंट रिकवर होता है, then after day plus 60 we again do bone marrow biopsy to know the disease status. So ये continuous process है, इसीलिए मैं इसको साइकिल की तरह दिखाया हूँ. Then second component is organ function evaluation. 4 major organs we have to evaluate. First is cardiac, where we do ECG, echo to detect any cardiomyopathy. Second is pulmonary, we have to do PFT, HSCT to assess lung reserve. Then there is renal, we have to check for creatinine and GFR. Then we have hepatic, we have to do LFT and ultrasound to detect any cholestasis. Then dental examination is also important because during transplant oral infection is the major source of infection. So you need a dental clearance to further progress in transplant. Then there are some general investigations which we have to do before transferring the patient to the transplant unit. It includes CBC, biochemistry, thyroid profile, iron profile, and test X-ray, ECG, urine routine examination. Whatever the general investigation you can remind, all those things will put under general investigations only.
Then we have infectious disease screening. In bone marrow transplant, we should not wait the infection to show symptoms. We have to hunt them down. So how we can hunt them down? By doing serological investigations, by screening HIV, CMV, EBV. Then by doing microbiology investigations, what are the microbiological investigation we can do? We can do urine, sputum and blood culture if necessary. Then we have to assess for vaccination status. ये जो पॉइंट है ये हमारे इंडियन सेटिंग्स में उतना नहीं चलता है. We are not doing assessment for hepatitis B or influenza vaccination, but if you go abroad, they put a lot of importance in this vaccination status. Okay. Then there are high risk assessment. If patient has a history of TB or COVID, we put them under high risk. Those patients can get infection pretty easily. Then we have the psychosocial component where we assess the patient for anxiety. We teach them any coping mechanism. We give support to the caregiver. And we educate the patient on isolation. क्योंकि patient जब एक बार transplant unit में जाता है, patient will stay for minimum of 25 days in the transplant unit, and patient family cannot stay with him or her. So we need to teach them how to focus during the transplant. Then there is nutritional assessment where we evaluate height, weight, BMI. We check for albumin level. Then we contact dietitian for customizable diet plan. Then the next component is logistical and financial component. इसके बारे में मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि इंश्योरेंस होना जरूरी है. नॉर्मल पीपल कैन नॉट अफोर्ड ये बोन मैरो ट्रांसप्लांट, सो इंश्योरेंस इज pretty much necessary. Then to do a complete transplant, patient need to complete all the admission process. So these are the components of patient workup. Now we'll move on to the donor workup. We have blood group and HLA typing. HLA typing नहीं करेंगे तो हमको donor identify कैसे करेंगे, ठीक है? तो HLA typing is important. Then we need medical fitness and infectious disease screening. Donor को भी infectious disease screening के through जाना पड़ता है. Then that donor needs medical fitness to be able to eligible as a donor. Then psychological readiness, patient needs to be psychologically ready for the transplant, क्योंकि donor को भी minimum of 7 days dedicate करना पड़ता है harvesting process के लिए. Then you need consent from the donor. Consent बहुत important होता है to avoid any legal issues. Then you need to decide on collection method. Usually we always decide on peripheral. We always decide on peripheral stem cell collection. We always decide on peripheral stem cell collection. आजकल वो ड्रिलिंग, बोन को ड्रिल करके मैरो निकाल के, ये प्रोसेस बहुत ओल्ड फैशन हो चुका है, बहुत कम यूज होता है आजकल. Then we'll discuss about multidisciplinary team in transplant. आप जितने भी पोस्ट आप इमेजिन कर सकते हैं, सारे ट्रांसप्लांट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. कोर टीम में हम लोग इंक्लूड करते हैं फिजिशियन, ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर, बेड साइड नर्सेज, pharmacist, dietitian. Everyone is a core part of our team. Like people can say कि ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर का हमारा पोस्ट नहीं है. हमारे पीजीआई में भी ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर बोल के कोई पोस्ट नहीं होता है, बट आवर इंचार्ज एक्ट एज ए ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर इन आवर यूनिट. So how can nurse integrate all those team together? First, nurse act as a clinical hub. Nurse always translate doctor's orders into action. Doctors अगर कोई भी मेडिसिन बोल दे तो उसको अरेंज करना. डॉक्टर अगर बोले कि एसटीपी चलने वाला है या ब्लड पीआरबीसी प्रोडक्ट लगने वाला है, उसको रेडी करना. So everything will be done by nurses only. Logistical hub, nurses get into contact with transplant coordinator, dietitian, physiotherapist for the patient. Then patient hub, nurses act as the single point of contact between patient and family. जब पेशेंट अंदर रहता है ड्यूरिंग ट्रांसप्लांट, जब अंदर रहता है पेशेंट आइसोलेशन में रहता है,
और हाई डोज ऑफ कीमो लगने के बाद पेशेंट might not want to communicate with the family, so it's our duty to communicate with the family के अंदर सब कुछ ठीक है, पेशेंट ठीक है, so that patient family can take less distress about the patient. So we'll focus on to nurses role. मेन ओवरव्यू में हम लोग जाएंगे नर्सेज रोल का. जो पहले असेसमेंट फेज में वी गैदर बेसलाइन डेटा लाइक हाइट, वेट, BMIs एंड ऑल. देन वी गो फॉर डायग्नोस्टिक कोऑर्डिनेशन. हम लोग ऑलवेज शेड्यूल एंड इंश्योर ऑल द इन्वेस्टिगेशंस आर डन और नॉट. Then we always ask we always schedule and ensure all the tests are being done, which we have already mentioned in components part, which all our tests are required for this pre-transplant phase. Then we have to explain all the purposes of each test, क्योंकि पेशेंट कभी कभी उनको लगता है कि इतने सारे इन्वेस्टिगेशन करने की क्या जरूरत है. So we have to explain each test and what's the purpose of it. Then we have to maintain documentation कि कौन से investigations हो रहा है and कितना workup already complete हो चुका है और कितना pending है. Then we communicate with coordinators and we communicate with doctors कि कोई भी investigations का result positive आए तो you have to inform doctors so that they can take necessary action. Then we'll discuss about organ specific evaluation in nursing role in organ specific evaluation. First, we have to discuss about 4 major organs: cardiac, pulmonary, renal, and hepatic. First is cardiac evaluation. We check for ECG and echo to rule out cardiac myopathy. We have to coach on PFT, कैसे PFT होता है, और we have to explain all the respiratory symptoms which patient has to inform. अगर कोई भी symptoms, respiratory symptoms उनको होता है तो patient has to inform either nurse or doctor. Then in renal evaluation, if anybody is working in BMT, they knows कि intake output BMT में कितना important रखता है. So we have to track intake output, we have to track hydration, and we have to always use caution for nephrotoxic medicines. Then in hepatic evaluation, we have to assess for jaundice. बहुत बड़ा important है ये, क्योंकि एक बार कीमो लग जाए तो पेशेंट का LFTs ऑलरेडी इंक्रीज होता है. सो वी हैव टू असेस फॉर जॉन्डिस, वी हैव टू असेस बेसलाइन एब्डोमिनल गर्थ, ताकि हम लोग बाद में कंपेयर कर सकते हैं कि ड्यूरिंग ट्रांसप्लांट कितना एब्डोमिनल गर्थ बढ़ रहा है. Then we need dental and ENT evaluation. Why do we need dental and ENT evaluation? As I have told already, पूरा ओरल म्यूकसा बहुत मेजर सोर्स ऑफ इन्फेक्शन होता है ड्यूरिंग ट्रांसप्लांट. ठीक है. सो वी नीड टू इंस्पेक्ट ओरल म्यूकसा रेगुलरली एंड वी नीड टू इनिशिएट क्लोरोहेक्सिडिन रिंग्स प्रोटोकॉल. क्लोरोहेक्सिडिन रिंग्स प्रोटोकॉल कुछ भी नहीं है, बस आफ्टर एवरी मील यू नीड टू रिंस योर माउथ विथ क्लोरोहेक्सिडिन. ये चीज पेशेंट को प्रॉपरली समझाना है. बाय डूइंग दिस सिंपल स्टेप, patient can prevent so many infection. Then nurses role in infectious disease screening. Nurses role simple होता है infectious disease screening में. We collect specimen and level it for standard serological investigations. Then we educate patient. अगर कोई भी test result positive आए, then we educate the patient and we isolate the patient so that बाकी वार्ड में इन्फेक्शन ना फैले. Sometimes we need to administer vaccine. ये बाहर के देशों में है. If you go to abroad, vaccination administration is the job for nurses only during pre-transplant workup. Then nurses role in nutritional assessment process is ये भी बहुत simple काम है. We need to assess baseline labs like calcium, magnesium, albumin. ये सब चीज हम लोगों को assess करना है. Then we have to check anthropometrics, all the height, weight, BMI. We have to check. If it's a baby, we can check medium circumference. Then we need to we need to contact dietitian to have a personalized
customizable diet. Why I said customizable? During transplant, patient will have many symptoms like loose stool or mucositis. So it's important to have a customizable diet so that we can customize the diet according to the patient's symptoms. और न्यूट्रिशनल असेसमेंट क्यों इम्पोर्टेंट होता है बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए कि रिसेंट स्टडीज के अनुसार ये पाया गया है कि if patient is malnutrition or malnutrient during pre-transplant, so there might be a possibility that patient engraftment will be delayed. ठीक है, तो अगर हम लोग properly manage करें during pre-transplant only, so that engraftment will not be delayed during transplant. Then nurses role in psychosocial and financial assessment. ये बहुत easy things है, as we have already discussed things. It's like we need to assess anxiety levels of patient. We have to assess anxiety levels of patient's relative, क्योंकि transplant already strenuous process होता है. Transplant का benefits and risk patient के relatives को समझाना पड़ता है, so that their anxiety levels can be reduced. Then we have to identify burnout risk. We have to identify first caregiver के कौन proper care लेने वाला है patient के, and we have to identify if patient caregiver can be burnout earlier than the transplant. Transplant बहुत बड़ा process होता है, and caregiver should be able to give care for minimum of 100 days. ठीक है. Then we have to set small and practical goals to improve patient's motivation. क्योंकि पेशेंट ऑलरेडी आइसोलेशन में है, तो पेशेंट को स्मॉल टास्क देना इम्पोर्टेंट होता है कि उनको फोकस रखना है, एंड पेशेंट हैज़ टू डू एवरीथिंग बाय देयर ओन. सो ये इम्पोर्टेंट होता है कि हम लोग स्मॉल गोल सेट करें और उसको फुलफिल करें. देन वी हैव टू एक्सप्लेन नेसेसिटी. पेशेंट को समझाना पड़ेगा कि ट्रांसप्लांट क्यों ज़रूरी है पेशेंट के लिए. वी हैव टू एक्सप्लेन द बेनिफिट्स ऑफ द ट्रांसप्लांट. ये तभी जाके पेशेंट विल कोऑपरेट. सारे पेशेंट कोऑपरेट नहीं करते हैं क्योंकि उनको समझ में नहीं आता है कि ट्रांसप्लांट क्यों नेसेसरी है. दे आर डूइंग ट्रांसप्लांट क्योंकि उनके घर वाले बोले हैं इस ट्रांसप्लांट से ठीक हो जाएगा, इसलिए. सो यू नीड टू एक्सप्लेन एवरीथिंग इन डिटेल्स कि क्या बेनिफिट्स है, क्या रिस्क है ड्यूरिंग प्री ट्रांसप्लांट वर्कअप. Then legal, ethical, and consent responsibilities of nurses. We have to verify patient understanding, as I have told that we have to ensure patient comprehension of risk and benefits of transplant. We have to verify all the consents are duly signed or not. We have to verify donor consent. अगर allogenic transplant है तो donor consent भी बहुत important है. We have to maintain confidentiality. ये point बाहर के देशों के लिए इट्स ओनली एप्लीकेबल टू अब्रॉड ओनली, क्योंकि बाहर दे हैव ए नेशनल रजिस्ट्री जहाँ पे यू कैन साइन अप एज ए डोनर. जो डोनर का हेल्थ इंफॉर्मेशन प्रोटेक्ट करने के लिए वी हैव टू मेंटेन ऑल द कॉन्फिडेंशियलिटी. देन वी नीड ए विटनेस सिग्नेचर. ये डिपेंड करता है इंस्टीट्यूशनल पॉलिसी के ऊपर. हमारे पीजीआई में मिनिमम 2 विटनेस जरूरत होता है ट्रांसप्लांट को ग्रीन लाइट देने के लिए. अचीविंग सेल्फ मैनेजमेंट आफ्टर ट्रांसप्लांट. सेल्फ मैनेजमेंट आफ्टर ट्रांसप्लांट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये प्री ट्रांसप्लांट के वक्त ही चालू होता है, क्योंकि ट्रांसप्लांट बहुत लंबा प्रोसेस है. यू कैन नॉट टीच पेशेंट ड्यूरिंग ट्रांसप्लांट के क्या क्या कर सकते हैं आप वापस नॉर्मल लाइफ में वापस जाने के लिए. सो यू नीड टू स्टार्ट ड्यूरिंग प्री ट्रांसप्लांट वर्कअप ओनली. पहला है वी हैव टू एसेस द पेशेंट्स नॉलेज, कि पेशेंट को कितना पता है ट्रांसप्लांट के बारे में, और पोस्ट ट्रांसप्लांट क्या क्या करने से वो सेल्फ मैनेजमेंट अचीव कर पाएंगे. देन वी एडुकेट द पेशेंट. वी गिव फैसिलिटी टूर. जब हम पेशेंट अंदर जाता है वी नीड टू गिव फैसिलिटी टूर के क्या है, कौन सा प्री ट्रांसप्लांट रूम है, कौन सा ट्रांसप्लांट रूम है. वी नीड टू गिव we need to teach patient how to keep himself hygienic. We need to teach them what are the side effects of chemo, what are the side effects of transplant, और कितना टाइम लग सकता है कि वापस सब कुछ नॉर्मल होने में. Then we have to teach practical skills for the patient. सेंट्रल लाइन केयर मतलब ये नहीं कि
वो खुद ही अपना सेंट्रल लाइन को ड्रेसिंग कर रहे हैं। सेंट्रल लाइन का केयर का मतलब ये है कि पेशेंट नीड्स टू बी केयरफुल ड्यूरिंग बाथिंग के सेंट्रल लाइन में पानी तो नहीं जा रहा है और सेंट्रल लाइन का ड्रेसिंग खुल तो नहीं रहा है। दिस नीड्स टू बी taught to the patient. Then you need to give टीचिंग अबाउट ओरल हाइजीन के कौन से टाइप का ब्रश यूज करना है। क्लोरोहेक्सिडिन हमेशा मील के बाद क्लोरोहेक्सिडिन यूज करना है। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट क्योंकि ओरल हाइजीन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन बोन मैरो ट्रांसप्लांट। म्यूकोसाइटिस होता है, ब्लीडिंग होता है, सो ये सब मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ड्यूरिंग ट्रांसप्लांट। Then teach back method, you need to demonstrate patient few things like oral hygiene. You need to demonstrate sits bath कैसे लेते हैं, you need to demonstrate it, and you cannot just ask do you understand. Patient will naturally say yes, so you need to tell the patient to re-demonstrate it to you so that you will understand that patient understood all the procedure. Then self-management achieve if patient re-demonstrate it back with confidence so that patient might be able to get into the get into his former self after post-transplant. Then we will talk about nursing documentation and communication during pre-transplant workup. As I have told, we have to maintain documentation sheet के क्या इन्वेस्टिगेशन हो चुका है, कितना वर्कअप हो चुका है ऑलरेडी हमारा। देन वी हैव टू गिव डेली हैंड ओवर कि कितना इन्वेस्टिगेशन हो चुका है। वी हैव टू राइट इट डाउन इन डेली हैंड ओवर सेक्शन। देन वी हैव टू फ्लैग एनी इनकम्प्लीट रिपोर्ट्स। कौन से इनकम्प्लीट रिपोर्ट्स, मतलब हम ऑलरेडी टेस्ट इन्वेस्टिगेशंस आर बीइंग डन बट reports are pending, we have to mention those things. Then we have to log baseline parameter. ये ज़्यादा important नहीं है क्योंकि we have nowadays कंप्यूटर में सब कुछ अवेलेबल होता है। You can just go back and see all the baseline parameters. Then we have to report any red flag. ट्रांसप्लांट बहुत डिस्ट्रेसफुल प्रोसीजर होता है पेशेंट के लिए क्योंकि उनको पूरा महीने भर के लिए अकेला रहना पड़ता है। सो इफ पेशेंट शोज एनी इमोशनल और फिजिकल रेड फ्लैग्स ड्यूरिंग pre-transplant workup, you have to inform to the doctor, you have to inform to the transplant coordinator so that they can take action. This is our units checklist. As you can see, it has general investigations, it has infectious screening, all the serological and microbial screening you can see here. Then there is endocrine profile, ये भी बहुत important होता है। HbA1c चेक करना, विटामिन D3 चेक करना, ये सब बहुत important होता है प्री ट्रांसप्लांट वर्कअप में। Then you can see overall assessment, it's basically organ specific investigations are listed here. Then you can see consent, all the consent for central line and donor apheresis you can see over here. दिस इज द डोनर वर्कअप। इसमें कुछ चीज़ें मिसिंग है। इफ यू सी देयर आर जनरल इन्वेस्टिगेशंस, देयर आर इन्फेक्शियस स्क्रीनिंग, बट इट डू नॉट हैव एनी कंसेंट क्योंकि हम लोग ऑलरेडी पेशेंट के यूनिट चेकलिस्ट में हम लोग कंसेंट फॉर डोनर एफेरेसिस लगा के रखे हैं। नाउ कमिंग टू द मेन टॉपिक, एलिवेटिंग क्वालिटीज। हमारा ये लॉन्गिट्यूडिनल प्रोग्राम का मेन मिशन है कि हम लोग कैसे क्वालिटीज़ को स्टैंडर्ड केयर टू एक्सीलेंट केयर में ट्रांसफॉर्म करें। सो आई हैव लिस्टेड फ्यू स्ट्रेटजीज वी कैन अप्लाई इनटू आवर BMTs. पहला स्ट्रेटजी है एडवांस बायो सर्वेलेंस। इट हैज़ 2 ब्रांच स्ट्रेटजी। पहला है सर्च एंड डिस्ट्रॉय स्ट्रेटजी। In search and distress strategy, we will not wait for the infection to show symptoms. We usually send mandatory swabs for rectal, axilla, groin, and oral swabs during pre-transplant workup only. We flag any positive results in EMR and we isolate the patient immediately. अगर कोई भी positive result आए, हम लोग पेशेंट को आइसोलेट कर देते हैं एंड वी रेस्ट्रिक्ट कॉरिडोर एंट्री बंद कर देते हैं ताकि इन्फेक्शन स्प्रेड कम हो सके।
Then the second strategy is to maintain a sterile shield. जैसे transplant में patient will go into neutropenic stage, so patient will be susceptible to the infection. तो उसके लिए patient को एक sterile shield की ज़रूरत है. How we prepare the sterile shield is very important. We verify HEPA filters के room में HEPA filters properly काम कर रहा है कि नहीं. We verify room fumigations are being done. हमारे units में it's a protocol के 3 दिन लगातार fumigation will be Majai mopping and fumigation will be done. Then or fourth or fifth day, the air culture will be done to check for microbial count. Then we need to prepare the patient to shift into this sterile environment. कैसे हम लोग prepare करेंगे? We have to teach the patient के fluorohexidine bathing protocol घर से ही चालू करना है. Sometimes we sometimes we tell the patient कि shift होने से पहले you need to take bath, proper bath. You need to change cloth to hospital cloth, sterile hospital cloth. Then only patient can go into the transplant unit. The second strategy is staff and community safety. It's our job to keep the patient safe, but it's also our job to keep us safe and community safe. How we can do that? We can do that by managing waste properly. We can manage cytotoxic, anatomical waste, recyclable waste. We need to dispose it properly so that we can keep our community safe. We need to teach the patient how to discard sharp containers, how to discard cottons, so that he can be also safe during post transplant. तो स्ट्रैटेजी नंबर 3 इज जीरो डिले माइंडसेट. ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आजकल के नर्सेज जो ऑलरेडी गवर्नमेंट में काम करते हैं उन लोगों का ये होता है कि हम लोगों ने सैंपल ऑलरेडी भेज दिया है, हम लोग उसके बाद कुछ नहीं जानते, डॉक्टर विल सी दैट रिजल्ट आया कि नहीं. ऐसा नहीं होता ट्रांसप्लांट में वी हैव टू बी प्रोएक्टिव कि हम लोग अगर सुबह ब्लड सैंपल भेज दिए हैं, बाई विद इन 3 आवर्स और 4 आवर्स यू नीड टू चेक के रिपोर्ट आया कि नहीं. अगर नहीं आया तो you need to escalate to the lab immediately. You need to speak with doctors के अभी भी रिपोर्ट नहीं है, so they can also contact with the lab. Proper अगर टाइम पे इन्वेस्टिगेशन रिजल्ट्स आए, then only the transplant will be finished at proper time. तो स्ट्रैटेजी नंबर 4 इज वेसल प्रिजर्वेशन. लाइफलाइन कंसेप्ट क्यों है कि पेशेंट ट्रांसप्लांट के लिए आते हैं उनका ऑलरेडी वेसल्स बहुत थिन होता है. सो वी हैव टू आइडेंटिफाई क्रूशियल वेन्स. अगर कोई वेन्स अवेलेबल है, वी नीड टू आइडेंटिफाई दोज फॉर फ्यूचर यूज. वी नीड टू इम्प्लीमेंट वेसल प्रोटेक्शन प्रोटोकॉल. प्रोटेक्शन प्रोटोकॉल बेसिकली क्या होता है कि बहुत सारा कंपोनेंट्स होता है इसमें, जिसमें we need to insert cannula in one go only. We need to always start from the distal portion of the veins. Then we need to avoid pricking 2-3 times. Already immunocompromised patient होते हैं, if we prick the patient 2-3 times, जितने भी बार हम लोग prick करेंगे उतना source of infection बढ़ेगा. Then we need to designate no-go zones. We have to mark antecubital fossa and upper area of antecubital fossa as no-go zones, क्योंकि antecubital fossa रिजर्व रहता है इमरजेंसी ब्लड विड्रॉ के लिए और अपर एरिया रिजर्व रहता है पिक लाइन इंसर्शन के लिए. ज़्यादातर टाइम पे ट्रांसप्लांट पेशेंट ट्रांसप्लांट पेशेंट के पास पिक लाइन होता है, सो यू नीड टू mention that upper area of antecubital fossa is a no-go zone. We need to instruct doctors to use ultrasound guidance. Some doctors are confident enough to not use ultrasound guidance or CVP line insertion or for PIC line insertion, but we need to instruct that the doctor के already immunocompromised है, we cannot just go around and prick the patient twice. Then there is strategy number 5, psychological safety and teach back method. ट्रांसप्लांट बहुत लंबा प्रोसेस होने के कारण हम लोग बहुत सारा इंफॉर्मेशन एक साथ डंप कर देते हैं पेशेंट के ऊपर. सो वी हैव टू आइडेंटिफाई इफ पेशेंट इज हैविंग एनी इंफॉर्मेशन ओवरलोड. वी नीड टू इम्प्लीमेंट टीच बैक मेथड. जो भी चीज़ हम लोग
डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं पेशेंट को रीडेमोन्स्ट्रेट करना होगा. वी नीड टू अवॉइड डायरेक्ट अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन. वी कैनॉट जस्ट से कि अच्छा आपको ओरल हाइजीन कैसे करते हैं हम लोग समझा चुके हैं. देन you cannot just ask it, do you understand? Patient will naturally say yes every day. So you need to ask specific follow-up question. You need to ask like, which type of brush will you use during transplant? So patient will, if patient says the correct answer, then you might go on. Then you need to conduct education session regularly. ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि एज आई हैव टोल्ड कि बहुत लंबा प्रोसेस होता है ट्रांसप्लांट, और फैमिली को इवन प्राइमरी केयर गिवर को सब कुछ हम लोग एक साथ नहीं बता सकते हैं. सो यू नीड टू कंडक्ट एजुकेशन सेशन रेगुलरली सो दैट पेशेंट रिलेटिव्स कैन अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है पेशेंट के साथ एंड ट्रांसप्लांट क्यों इम्पोर्टेंट है और पोस्ट ट्रांसप्लांट केयर कैसे करना है. To conclude, the main workup is our foundation, and nurses are the architect of our foundation. Foundation is so nurse ensure that our foundation is solid or not. The quality is nurses active defense. We need to upgrade our quality from standard care to excellent care, and our goal in pre-transplant phase is to deliver a patient to the transplant unit who is mentally prepared, physically optimized, and biologically safe. These are the reference. I have referred it. You can go to Google and search EBMT handbook. You'll get the PDF. Then there are some national guidelines. I have took it from Ministry of Health and Family Welfare. This is it from my side. Anyone has any questions? Thank you so much, Mr. Mrinmoy, for this highly structured and insightful presentation. If there are any questions from the audience, if anybody has any questions, go forward with their questions. Or if there's nobody, then I have a few, because this was a new topic, a very interesting one to be precise. So I have a few questions. If anybody doesn't have any questions, they can raise their hands, please, if we have any questions, or else I'll go ahead with the questions. And I hope a lot of the audience, this might be a new topic. So a lot of few people might have come across certain processes as to how a patient undergoes the bone marrow transplant. So there are a lot of things. So one question that I have particularly, Mr. Mrinmoy, please can you elaborate at slide number 22, I think, you mentioned about the psychosocial and financial assessment. Yeah. It was slide number 22, I think, if I'm not wrong. What slide? The one after this. Next slide, please. This one. Okay. Yes, this one. So here you mentioned about how to go about with the psychological and financial assessment for the patient. Now in this you mentioned that the patient, we have to assess about the patient's anxiety levels. We have to identify about the caregivers burnout risk. So how do as a nurse, for example, if I am working in a BMT unit and a patient has come to me for BMT, either be it a recipient or the donor, how will you assess the anxiety for this patient and how often do we do that? So is there a specific checklist that we use for measuring the anxiety, or is there a checklist that the BMT unit has in which it is mandated that the nurses go for assessment of the patient's anxiety? And similarly for assessing the burnout risk for caregivers, how do we assess the burnout caregivers? Do we do regular assessment of every caregiver that is present in the BMT unit? So I need a little elaboration on this point, because this seems a little interesting to me. So kindly explain it, please, if you can. Okay, so we do not have any proper checklist for assessing anxiety. It's like you need to allow the patient to ask questions about his doubt. कि क्या doubt हो सकता है उनके पास. Then you need to check if you explain the doubts and patients are asking again and again, then you have to decide that okay, patient might have anxiety related to the transplant procedure. You need to particulate, you need to observe the patient properly to find out if patient has anxiety or not. Okay, so do we repeatedly ask questions to the patient about
what is, for example, if the patient has any sort of anxious questions कि मैं ठीक हो जाऊंगा कि नहीं हो जाऊंगा, या फिर बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बाद क्या होगा, या फिर उस पूरे प्रोसीजर में मुझे कितने इंजेक्शंस लगेंगे, क्या मेरा कोई ऑपरेशन होगा, मुझे बेहोश किया जाएगा, क्या इस तरह के क्वेश्चंस पूछना पेशेंट का उसकी एंजाइटी शो करता है? और अगर पेशेंट इस तरह की एंजाइटी शो करता है तो क्या हमारे पास कोई साइकोलॉजिकल बैकअप है फॉर द पेशेंट? डू वी रेफर द पेशेंट टू एनी psychologist per se or a clinical psychologist for his or her counseling? Patient do actually ask these questions, but these questions are common, right? So if patients are asking it regularly, we conduct a counseling session for them. Always before transplant we conduct a proper counseling session for them and for the family also. ठीक है, तो ये प्रॉपर काउंसलिंग सिस्टम हम लोग करते हैं, जिसमें हमारा नर्स कोऑर्डिनेटर मतलब इंचार्ज रहते हैं, 1 बेड साइड नर्स रहते हैं, 1 सीनियर नर्स रहते हैं और 2 डॉक्टर्स रहते हैं. सो प्रॉपर काउंसलिंग सेशन रहता है और उसमें जो भी डाउट होता है वी एनकरेज द पेशेंट टू से एवरी डाउट अबाउट द प्रोसीजर, अबाउट एवरीथिंग. उसके बाद भी अगर कोई डाउट है एंड इफ पेशेंट शोज एनी एंजाइटी, देन वी रेफर दैट पेशेंट टू ए साइकोलॉजिस्ट. हमारे पास अभी साइकोलॉजिकल साइकेट्रिक टीम आया हुआ है हमारे पीजीआई में. Okay. सो वी रेफर देम इन ओपीडी बेसिस ओनली. Okay. The next point was about the identification of a caregiver's बर्नआउट. burnout. Yeah. हाँ, ये क्या होता है कि पेशेंट ऑलरेडी कीमोथेरेपी बहुत बहुत साइकिल ऑफ कीमोथेरेपी के अंडरगो चला जाता है. ठीक है, तो उसमें क्या होता है, पेशेंट केयर गिवर माइट लूज होप कि ट्रांसप्लांट होके भी क्या है, या हम लोग ट्रांसप्लांट करा रहे हैं, लास्ट ऑप्शन है ये. सो उसके लिए यू नीड टू टीच द पेशेंट केयर गिवर के क्या क्या बेनिफिट हो सकता है, क्या क्या रिस्क हो सकता है, और रिस्क और बेनिफिट रेशियो क्या है. ठीक है, Okay. तो ऐसे आप उसको मोटिवेट कर सकते हैं कि ठीक है, यू नीड टू होल्ड ऑन टू मिनिमम ऑफ 100 days, देन यू कैन डिसाइड कि ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल है कि नहीं. और यू कैन देन गो ऑन टू, अगर और भी इनको लगता है कि नहीं ट्रांसप्लांट करा के क्या ही फायदा है. समटाइम्स विथ वन गो ट्रांसप्लांट कभी सक्सेसफुल नहीं होता है, किसी किसी पेशेंट को हम लोग रिपीटेडली ट्रांसप्लांट करते हैं. तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनको समझाना कि ट्रांसप्लांट का रिस्क क्या है, और उनको समझाना कि कैसे प्रॉपरली टेक केयर करना है पोस्ट ट्रांसप्लांट. क्योंकि एक बार इन्फेक्शन, पोस्ट ट्रांसप्लांट इन्फेक्शन हो जाए तो ये बहुत बड़ा इशू हो जाता है कि पेशेंट के केयर गिवर ठीक से केयर नहीं कर पा रहे हैं. तो ये भी इम्पोर्टेंट है सिखाना कि कैसे टेक केयर करना है, कैसे बर्नआउट को कैसे सप्रेस करना है, कि कैसे थकना नहीं है. क्योंकि बहुत लंबा प्रोसीजर है. फॉलोअप्स यू नीड टू लाइक पोस्ट ट्रांसप्लांट फॉलोअप्स होते हैं, बाई वीकली फॉलोअप्स होते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये सब करना. बर्नआउट रिस्क होता है पेशेंट के रिलेटिव को, और उसको आइडेंटिफाई करना भी नर्सेस का ही रोल है. लेकिन जैसे कि मैं, मतलब मुझे, मैं ऐसा कॉन्टेम्पलेट कर रहा हूँ इसको कि एक तरफ तो पेशेंट के केयर गिवर्स हैं, जो पेशेंट के इमीडिएट फैमिली मेंबर्स हैं, हु आर सपोर्टिंग. नॉट केयर गिवर्स, इट्स लाइक केयर गिवर. यू कैन नॉट प्लूरल, क्योंकि पोस्ट ट्रांसप्लांट only one One person is allowed to be with the patient. Okay, so rightly said. So if that caregiver, who is an immediate family member to the patient, can get burnout, in that case, can we also expect the staff who is working in the BMT unit to have a burnout? In that case, can the staff also feel that a lot of times they may also have some emotional, it may be predilections with the patient, that a caregiver like me, for example, I am deployed in the bone marrow transplant unit, I may also undergo this burnout. You might, but हमारे लिए क्या होता है कि we change shift every day, right? Okay. हमारा शिफ्ट चेंज होता है, बट फॉर द पेशेंट देयर इज ओनली वन केयर गिवर. सो द पेशेंट केयर गिवर को सब कुछ प्री ट्रांसप्लांट से लेके, इवन फ्रॉम कीमो से लेके, प्री ट्रांसप्लांट से लेके ट्रांसप्लांट देन पोस्ट ट्रांसप्लांट फॉर 100 days. तो ज्यादा रिस्क किसके पास होगा? ऑफ कोर्स केयर गिवर के पास. Okay. Okay. Then there's one question at the last. I won't trouble you much. There was one question that I had regarding the checklist that you mentioned. I simply just want to see that checklist once again, if it is possible for you to please. I think it's
कौन सा वाला चेकलिस्ट? पेशेंट चेकलिस्ट और हाँ, पेशेंट चेकलिस्ट। सो इसमें एक चीज जो मेरा डाउट बन रहा था वो ये था कि यहाँ पे मेंशन है आपका कि एलोजेनिक हेमेटोपोइटिक ट्रांसप्लांटेशन है ये। फॉर ऑटोलोगस ट्रांसप्लांटेशन के लिए भी क्या हम सेम चेकलिस्ट यूज कर सकते हैं? क्या नंबर ऑफ टेस्ट एंड ऑल एवरीथिंग रिमेन्स द सेम, या फिर हम इसको चेंज करते हैं फॉर ऑटोलोगस केसेस? It's remains everything is same except the consent for donor apheresis। ठीक है, डोनर एफेरेसिस में अलग कंसेंट हो जाता है, क्योंकि हम लोग पेशेंट को ही ऑटोलोगस में पेशेंट का ही स्टेम सेल्स लेते हैं, तो ये कंसेंट पेशेंट ही साइन करता है एंड एवरीथिंग रिमेन्स सेम। Okay, thank you so much. So this will be all from my side. If the audience was listening to us at this point, if there are any questions, if they have, if they can raise their hands, we can take up questions as well. You can put your questions in the chat box also if you have any. Okay, so I don't think there are any questions from the audience. So thank you, Mr. Mrinmoy. Your session clearly demonstrated that pre-transplant workup is far more than a checklist, as I can very much see also from all the work that you have put into making this presentation insightful. It is a dynamic multidisciplinary process where nurses functions as clinical analysts, coordinators, and even patient advocates. The discussion particularly about the 4 pillars in which you mentioned about the disease and organ status, which was very eye-opening for me also, as for example, I haven't worked in a BMT unit ever since, and I hope many people would have thought of this as a new learning. Then you mentioned about the donor clearance. How do you get the donor clearances? How do you prepare the patient psychologically and financially? And also everything logistical about the bone marrow transplant was discussed in detail. So thank you so much for this presentation. This presentation basically reinforces the idea that the quality nursing practice is the foundation of transplant success. So making the patients safe, ensuring that the transplantation is optimized physically and emotionally for the patient was very interesting to see. So thank you so much everybody for joining in. At the end, I would like to thank our patron, Dr. R.K. Singh, HOD, Department of Emergency Medicine, our co-patron, Dr. R. Harshvardhan, Medical Superintendent here at SGPGI MS Lucknow, our program in charge, Dr. Tanmoy Ghatak, Additional Professor, Department of Emergency Medicine, our program co-in-charge, Dr. Utsav Anand, Assistant Professor, Department of Emergency Medicine, and a nursing program coordinator, Ms. Join Datta Ghosh, Senior Nursing Officer, Quality Cell, Department of Hospital Administration here at SGPGIMS. So thank you so much. Thank you everybody for joining in. We'll see you in the next class. Thank you so much.